शूट कर रही थी जो तमिल वर्जन है, आई थिंक इट हैड जस्ट द बेस्ट टीम. देयर वाज नेल्सन सर जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, देयर इज जानी मास्टर हु इज द कोरियोग्राफर, एंड रजनी सर का होना तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैजिकल था ये गाना शूट करते वक्त. एंड हम जानते थे हम एक अच्छा गाना शूट कर रहे हैं, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज कि वैसे तो मतलब सब रील्स बनाते हैं, बट आई वाज लाइक मुझे रील बनानी है, एक रील बनानी है. एंड या just went ahead. मेरा नोटिफिकेशन बंद ही नहीं होता. बहुत सारे लोग remix reel that's going on my Instagram, and लोगों ने बहुत सराहा है इस गाने को. काफी सारी बार हम फिल्मों को प्रमोट करते हैं, ये पहुंचा रहा है, और literally like we are almost like we have to promote this song because everyone has loved it so much. And Jailer is a film that's very special to me. Because it's a very, very rooted film. And I'm looking forward to actually interacting with the media on this. पहली बार मुंबई में कर रहे हैं, तो would like to give it time to talk to everyone from the media. Absolutely, yeah. But I'm going to actually call somebody who's very excited also कि ये गाना इतना viral हो गया. So when you start to distribute a movie, also have to realize कि भाई public तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है. Starting में पिक्चर अच्छी हो जाए तो ठीक है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है. But ladies and gentlemen, put your hands together for the CEO of UFO Distribution. Pankaj ji, can you please have you here, sir? Thank you so much for being so involved in every aspect of it. But आपका आधा काम तो बहुत easy हो गया. People keep looking for that one spark. And Anirudh, the music director, has this in him. I remember Kolavari D जब सालों पहले आया था, viral हम लोग ने भारत में सीखा था from Anirudh. उससे पहले सिर्फ Gangnam Style was viral. So when you heard this song, were you actually thinking about the song, or you only worried about कि भाई रिलीज अच्छी हो जाए, सब जगह पहुंच जाए, वो सब जरूरी है? नहीं, worried about आप बोलो तो मैं I was worried about तमन्ना जी आज आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ये 2 मिनट का बीच में जो हॉल था was acceptable as long as तमन्ना जी is here. आपको मेरे को देखने के लिए कोई नहीं आने वाला है. Right. But yes, गाना definitely viral हो गया था. The day I realized परसों वर्ली नाका सीलिंग से मैं बाहर निकल रहा था, I was just amazed. उधर एक ट्रैफिक आइलैंड है, बच्चे लोगों को गाना लगा के they were practicing the hook step. So बोला अपना काम तो हो ही गया है. Moment the ground level team and the audience accepts a song, that's it. It's a hit. And of course Jani Master and Tamanna ji, और क्या बात है? नहीं, but जैसे आपने कहा, Anirudh is a music composer जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. And I think we are very, very fortunate to have him on our team, and he's given us a wonderful track. So पंकज जी, when you see big star cast like this, ये तो बहुत next level. मोहनलाल सर है, शिवा सर है, रजनी सर है, तमन्ना, जैकी श्रॉफ. I think there's a pressure sort of increase also to make sure कि right audience देख पाए. फिर क्या होता है नहीं, in a regional film which becomes national, and then you're trying to we're still fighting with it. Let's be honest, 5 साल से we're still fighting with the fact कि क्या हम इसको national बना पा रहे हैं कि नहीं. But we are superstars in it. So pressure बढ़ जाता है क्या distribution में? डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, इतने पैसे लगे हुए होते हैं. बट व्हेन यू सी द कंटेंट, आज आम आदमी को क्या चाहिए? भैया 3 घंटे में जाता हूँ, ऐश करके आता हूँ, और रजनीकांत सर जैसे आएंगे, सीटियाँ तो वैसे ही बच जाती है. द 3 minutes, the 3 hours, you just forget your worries, you enjoy and you come out. When you have that feel, डिस्ट्रीब्यूशन का टेंशन निकल जाता है फिर. एंड आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है. वो बोलता है पर्पल पैच, जब कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, कोई बैट्समैन भी पूछता है कि हर एक चीज अच्छी चलनी चाहिए. सलिल, आपको नहीं लगता ये जो आप अमेजिंग सवाल पूछ रहे हैं मीडिया? ये भी करेंगे, लेकिन मेरे को भी पूछने दो, उसके बाद तो मेरा पूछना ही नहीं. क्या पूछना है आपको? दिस अमेजिंग पैच फॉर द लास्ट 3 months, यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट गोइंग. यू नो, आपके हिट आफ्टर हिट, वेदर इट्स ऑनलाइन और वेदर इट्स द फिल्म्स. आर यू काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स? आर यू visiting an astrologer? Are you visiting the mandir a little extra? They say luck favors the ones who work hard, and luck favors the brave. So I've just been brave, and I've just been intentional, and I'm doing everything that excites me, ignites a fire in me, and luck seems to be favoring that. Luck is favoring the brave in a very nice way. And now her brave request is,
Please go ahead. Like I said, this Yeah, is as much as I love Salil, I actually don't want to rock him. this is the most intimate, beautiful setting. Go ahead. Anybody, just we'll go one at a time. Can we just, even if you don't want to use a mic because it's so close, you can just raise your hand and go ahead and ask a question. पहले कौन? अभी आंखें नीचे हो गई हैं. I'll continue. I can continue a discussion if you want. Anybody asks? Okay, if nobody has anything to ask, then. I have lots of questions to ask. Oh, you have? Okay. Even yeah. Hi, yes. Oh, there is. Acha, are you waiting for the mic? Oh, okay. You can, if you can stand, you just say where you're from and please go out. Yes. I feel today content is the most important aspect, and be it male or female, like आज एक heroine का part या आज ये गाना a guy can't do, right? Like you need a actress to do it. Nobody would watch it if it was being done like that. So everyone has their part. In fact, ये फिल्म सबसे बड़ा सबूत है उस बात का. इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़ी स्टाइल पे बनाई गई है. रजनी सर हैं, मोहनलाल सर हैं, शिवराज सर हैं, Ramya Krishna ma'am hai, Jaggu Dada is there. I have a part to play. We are all playing parts in a movie, which is the vision of Nelson sir. So आज ऐसा दौर आ गया है कि nobody is shying away from playing a part, because essentially जैसे कभी जब इंडिया मैच जीतती है तो कोई केयर नहीं करता कि किसने कितने रन बनाए. अच्छा लगता है जब सचिन 100 कमाता है, but it's always nice that India जीतती है. So for us, the movie is like that. We want the film to do well, and when that does well, overall, because that's a very big thing to say, but I can tell you one thing, sir, that we've not made a pan-India film. We've made a rooted, true to its region, strong, big, massy entertainer with probably the biggest superstar the country has. And, but we're not trying to make a pan-India film here. We're trying to make a film जो लोगों से जुड़े. एंड वापस से जब हम कावाला जैसा एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, ये हमारे लिए भी एक एफर्मेशन बन जाता है कि जब वो सॉन्ग अच्छा हो. अच्छा, ये तमिल सॉन्ग है जिसका टाइटल तेलुगु है, you know, so that's unique. You normally don't have a Tamil song with a Telugu title. And now we've come to the Hindi audiences because we feel like our content is strong, that it will travel across languages. उसको भाषा की जरूरत नहीं है. So I don't think it's one industry over another. It's only about when we are culturally so strong that whenever we take our culture and we celebrate it, वो automatically we are at least hoping कि पूरे देश तक पहुंचे. So यही हमारा प्रयास है. తమన్నా ఏం కావాలా? ఏం కావాలా? మీరు కావాలండి. మీలాంటి బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓ బాగుంది. Okay, you love dancing and you're a very exuberant dancer, you know. What dancing means to you? I just know one thing कि कोई भी मैंने आज तक किसी को गुस्से में डांस करते हुए नहीं देखा. मतलब आपको खुश होना पड़ता है. It's like a given कि अगर आपको डांस करना है तो आपको खुशी में करना पड़ेगा. So I've never seen a very angry person dancing or upset. Have you seen an upset person dance ever? But I've seen people struggling. आप किस तरह करते हो? हम लोग का ऐसा नहीं है. नहीं, struggle is a different thing. Have you seen someone sadly dancing? Nobody sadly dances. Everyone happily dances. Yeah. So I think that's the kind of dancer I am, and that's the kind of dancer I've always been since I was a young kid. I just love dancing. It's a way for me to express myself. It's a way for me to channel my joy. And I love doing it with my loved ones in person, and of course as a performer for the entire audience, because they're all the people I'm actually doing this for. Tamanna, this is a very good phase for you, you know, personally and professionally also. What would you like to sum up in 2-3 sentences? I think today, as a woman in 2023, it's very important to accept yourself the way you are. And the moment you start doing that, everyone starts accepting you. And I might have been one of those fortunate people who had the luxury of learning this through the growth of my cinema journey. But I could say this to everyone. It's beauty,
people think that film actors, or say supposing people think that I am beautiful. I think true beauty comes from just acceptance. And the moment you do that, everyone loves you. Tamanna here. Hello. Hi, how are you? It is fantastic, you know, जब आपको ऑन स्क्रीन देखे और जो डांस इतना वायरल हो गया है, और आपने अभी कहा कि क्रिकेट टीम जब खेलती है तो किसी एक को क्रेडिट नहीं आता, कि हम जीते ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या आप जिंदगी के करियर के इस मकाम पे आ गई हैं जहाँ दिल से फैसले लेने लगी हैं, दिमाग छोड़ दिया, दिमाग से फैसले लेना बंद कर दिए? नहीं सर, दिमाग बहुत जरूरी है, दिमाग को कहीं नहीं छोड़िएगा. हम नहीं छोड़ते ताकि आपको भी अपना दिमाग घर पे नहीं छोड़ के आना पड़े, ताकि आप भी अपना दिमाग सिनेमा थिएटर में लेके आ सके. हमारा तो यही प्रयास है. नहीं सर, आई थिंक दिल की सुनना बहुत जरूरी है, बट जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो तभी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. और ये बहुत ही एक सुंदर फेज है मेरे करियर का, जहां मुझे अलग अलग प्रकार के किरदार निभाने का मौका मिल रहा है. एंड लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं. जैसे इसी कुछ इन 2 महीनों में बहुत ही वेरीड किस्म का काम करने मिला है मुझे. एंड आई एम रियली थैंकफुल. आई एम आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम दैट आई हैव स्पेंट even in the South Indian film industry, Sun Pictures, who were the producers of the Tamil version, and UFO Media, thank you sir, thank you for presenting us to the Hindi market, and I hope this film does well for all of us. Sun Pictures और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, because even before I became a popular face in the South Indian film industry, I've done a lot of ads for their brand, and yeah, it's always been magical to work with them. They really cater to audiences, and they make content for audiences. Tamanna, what was your reaction the moment the maker asked you to be on board? क्या as an artist जब आप किसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं? और फिर ये जो गाना अपने आप में इतना बड़ा हो गया हिट, वो आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा, जैसे सर ने बताया कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रोड पे? You know, I feel जब आप ऐसे नाम सुनते हैं जैसे कि अनिरुद्ध सर, Nelson sir, of course this is Rajni sir's film, so being a part of his film, I feel ऐसे नाम बहुत ही bankable नाम है. और इसीलिए नहीं क्योंकि वो बहुत like already बहुत अचीव किया उन्होंने इंडस्ट्री में. उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली अचीव किया है इंडस्ट्री में, और ये वैसे भी मुश्किल है, बिकॉज द क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, everyone has a good day and a bad day, but these people have like an unbreakable track record. So I think मेरा natural instinct था कि ये मुझे करना चाहिए, and I'm glad मैंने किया, और I'm glad लोगों को इतना पसंद आ रहा है. Hi Tamanna. Hello. Kesha this side from E-Times. What I want to ask you is that I want you to tell me the one thing respectively that you've learned from Chiranjeevi and Rajnikant, that now that you've worked with them. I think both of these people, they are extremely humble, extremely hardworking, dedicated, and they've not taken their positions for granted. So as a young actor, this is something that I learned from them, and I hope to imbibe it till the end of my career and till life. Hi, Tamanna here. Hi. Hi. I have a question. You said something wonderful about the Indian cricket team and everything. So there was an interview of Priyanka Chopra many years ago, I think at least 5 years ago, where she had said that when she went to Hollywood, there were many actors, like many superstars, who were willing to do 5-minute roles, 5-minute parts in a big film to make the entire film work. Do you feel, you've seen the industry very closely from a very young age, there are insecurities that crop up between actors in any film industry, which is why a lot of films don't even happen. A lot of filmmakers have also gone out and said that many of their multi-hero films, multi-heroine films have not worked out because of this. But women have majorly been more successful than multiple hero movies of late. Do you see a change in the younger generation of actors today? Do you feel that there's more security, or do you think that insecurities are still there? I think change is individual. Like, I remember when Bahubali happened, or my very first successful Telugu film Happy Days happened. Thereafter, a recent show I did, Ji Karda. I have always been a part of ensemble films, and I've never shied away from that, because I think there is power when a lot of great creative people come together. And I think I've always been a very secure actor, so I can talk for myself that I feel, in fact, when you are with these great stalwarts of the industry, your best comes out, because you know you can't do anything but your A game. So you bring on your A game and you take it on head on, and if all goes well,
the audience loves it, and the return is manifold, and it actually lasts for, like, Bahubali is a film I think nobody will ever forget in Indian cinema, and I feel like I got an opportunity because I was open to the idea that I should be a part of an ensemble and not think, "Arey, my role is that much or my role is this much." Understanding that every character has its own part to play. मैम हेलो तमन्ना जी 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 कहाँ पर? यहाँ पे तमन्ना जी Yes. तमन्ना जी शारिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस नमस्ते. बहुत ही फैंटास्टिक नाम है आपका. जी तमन्ना जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे पहले आइटम नंबर्स होते थे और बहुत हिट भी हुए हैं, बट अभी हम देख रहे हैं कि जैसे साउथ इंडस्ट्री डोमिनेट करी आइटम नंबर्स को, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपका क्या है? You know, it's an interesting thing that you ask. जब मैं I had audio issues. अच्छा, one sec, slowly. अब वो बाद में करेंगे ना? Yes, now we'll just answer that question. शाहरुख भाई का क्वेश्चन. Yeah. Slowly, please. One Would you minute. like to ask that question again, sir? Yeah. So that we make sure your audio is recorded. तमन्ना जी शारिक है शाहरुख? हम दोनों को शाहरुख लगता है. हाँ, so तभी तो बोला ना इतना अच्छा नाम है. हो जाए. तमन्ना जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आइटम नंबर्स पहले होते थे और हिट होते थे, पर अभी साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे आइटम नंबर्स हिट हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न मानती हैं आप इस चीज़ का? You know, I'll tell you one thing. When I started my career and I had already like received a lot of love and it was way into my career, I just felt like I used to really enjoy dancing, and that's when I got my first opportunity for a special song. And I was like, you know what, I love dancing. I love to dance, I love to perform, I want to do this song. So I have done, I think, this must be my 7th or 6th song that I might have done in my career, out of which I think 2 or 3 really became big songs, this being the most heard. So I feel like it's not about a certain industry or about I just feel like हर song की अपनी तकदीर होती है, and incidentally it's happened so that a lot of good audio has come from the southern film industry. Anirudh is a wonderful composer, and I feel like right now the joy of being an actor or a creative person is all those lines ना कि यहाँ से है वहाँ से है, all the regionality का lines are completely blurring. So it's a great time for us creative people because we can have that exchange. तमन्ना जी एक और क्वेश्चन है कि मतलब सब लोग आपके ये गाने पे रील बना रही हैं, आप किसके साथ रील बनाना चाहेंगी ये गाने पे? सर मैंने तो बना ली 2 बहुत ही खूबसूरत डांसर्स के साथ, इसीलिए सब बना रहे हैं. तमन्ना दिस साइड आदि यहाँ बनाएंगे ना आज. Today we'll make today reels. Tamanna, normal film to this film, what different and extraordinary things you did for yourself? What was extra Tamanna you put? Okay, yes, this is something I can do it. I think one thing I have to credit, and I am always very passionate about every time I go on a film set or even whatever, whether I'm interacting with you guys or making a reel or making a movie, my every moment of doing this involves a lot of passion, so I've never come without it. But I was very pleasantly surprised to see, apart from Jani Master being on set, Nelson Sir was there throughout the song shoot for every single shot, which is a rarity. Not every director likes to be on set when a song is being filmed. Some few filmmakers do that, and you can see the difference. Like you can see the quality that comes across when the director is a part of the music and a part of the kind of song that gets churned out. So I am very thankful to Nelson Sir because he's been a huge part of why Kavala looks the way it does. Tamanna, this is such a huge assembled cast is there, but credit to you that you are carrying the press meet on your shoulders, being a woman. What do you have to say? I am a Mumbai girl. ये तो मेरा city है. मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ. आप लोग मेरे अपने हो. तो मुझसे better. I mean, I feel very proud कि इस team ने मुझे काबिल समझा कि मैं आके आप सबके साथ ही वक्त बिता सकूँ, because whether you know it or not, I have a very soft corner in my heart for you guys, and it will always be like that because I am from here, and the fact that you're giving this so much love means a lot because today you guys are helping us blur the lines, whether it's a Tamil film, a Telugu film, any kind of film, it's with your help that we're able to blur the lines. So
So yeah, I feel super lucky to kind of be the flag bearer of Jailer. Would you like to answer Pankaj? Would you like to answer Pankaj? He was worried that if you don't come. No, who Pankaj? Sir, आपको टेंशन था कि मैं नहीं आऊंगी? मैं तो वो चप्पू भी लेके आ जाती. अरे वो तो ह्यूमर में था ऐसे. Tamanna, hi. Red alert. Tamanna, hi, Russell. Hi. Hi, Russell. Hi. You're from PTI. Hi. Tamanna, my question is a little on the nose. I hope you don't mind. The thing is, your pairing is looking obviously fantastic with Rajni sir, and it looks with any hero. When it comes to Hindi films, the moment the age gap is a bit large, like recently we saw in Tiku with Sheru or with Salman Khan movies, usually there's a lot of chatter over it. When it comes to South movies, we don't see the same chatter, be it with Rajnikant, be it with Chiranjeevi. Now, this is not a personal thing. I just want to see about the fans. Is it because the South heroes are put on a pedestal and they are worshipped so much so they are impervious to such criticism? No, I think all these really big superstars understand that they're actors first. And as an actor, your age doesn't matter. It's only in India we have this idea of age and actors being of a certain age. Internationally, I mean, nobody asks these questions because it doesn't matter. We are an actor. I am playing a character. Rajni sir is playing a character. He's a god. He's a demigod for like the entire nation. But he's still, everyone is playing a character. And I feel like we as performers value that over everything. So that is supreme. And you know what? I might be 60 and I might be still doing a song like this. And I think if a Tom Cruise can be on a, do an action sequence at the age of 60, I want to do this song at 60 and I want to rock it even more. And I hope people go berserk way more than they have today. I'm sure you That's will. my quest. I'm sure you will. One second. One second. तमन्ना जी जानना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप काम करती हैं और वो भी जो लव वंस होते हैं नियर डियर वंस होते हैं विजय सर का क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है बस यही, that's why. So post-COVID, that has been what we have been planning at, getting the movies pan-India. North के movies लेके जाते हैं South में, South के North में आ जाते हैं, and then as Tamanna ji mentioned, the lines are blurring right now. So with not difficult at all with the kind of ensemble that we have right now, and apart from that, as Vivek ji also mentioned, this is a mass movie. Entertainment. भैया 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जाते हैं ना, ज्ञान नहीं देना, मेरे को entertainment देना. The content speaks for itself, and the moment the content speaks for itself, then it is the job of the jockey कि भैया उसको बराबर handle कर लेना, सिर्फ cinemas में जाने देना. It runs on its own. So no, it has not been that difficult, but yes, we need to just manage it. Hello. ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक मेमोरी एक शेयर करना चाहूँगी आपके साथ. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पहली बार, आई रिमेंबर गोइंग इनटू अ थिएटर इन इंटीरियर तमिलनाडु एंड मैं एक तभी ना थिएटर में जगह नहीं बची थी, बट वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ. सो दे एक्चुअली पुट अ स्टील का चेयर फॉर मी सो आई कुड सिट एंड वॉच रजनी सर ऑन स्क्रीन. एंड मैंने पहले 10 मिनट फिल्म देखी नहीं क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. बिकॉज क्योंकि लोग सिर्फ अलग अलग चीज़ें उड़ा रहे थे. स्क्रीन वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्स विथ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड दैट इज द हिस्टेरिया ही इज हैड इन मूवी थिएटर्स. एंड मैं एक स्टील के चेयर पर बैठ के मैंने फिल्म देखी है. So I cannot tell you that today it's a matter of great pride for me to actually be a part of his film and take it to even the audiences here in Mumbai. And yeah, उनसे ये तो सीखा है मैंने कि हमेशा लोगों का आदर करना चाहिए. वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा acknowledge करते हैं, प्यार देते हैं. उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फैन को अवॉइड नहीं किया या उन्हें अटेंशन नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ऑडियंसेस के प्यार के वजह से ही उनका आज ये इतना बड़ा दर्जा है. तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, ये उनसे मैंने सीखा है और मैं चाहूँगी कि जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ मैं उनको प्यार दे सकूँ बिकॉज उन्होंने हमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया है. सो दैट्स समथिंग आई टेक
and keep it with in my heart. Yeah. Tamanna, here. Yeah. Straight, yeah. Oh yes. Hello. So तमन्ना, अगर आप डेब्यू की बात कर रही हैं, नई जर्नी की बात कर रही हैं, जितना हमें याद है 2005 में आपने डेब्यू किया था हिंदी में और लगभग 18 से 19 साल हो गए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही अगर जर्नी की बात हो, आप जिस पड़ाव पर आज खड़ी हैं, 19 साल हो गए हैं, यू नो कि साउथ में तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जैसे बाहुबली जैसी बहुत तमाम फिल्में हैं आपने की है, लेकिन कहीं लगता है कि कुछ छूट सा गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यू नो कहा जाए बॉलीवुड में, कभी लगता है ऐसा जब आप सोचती हैं दूसरी एक्ट्रेसेस? मैं जिंदा हूँ और मैं अभी तक सांस ले रही हूँ, मतलब टाइम चालू है, मतलब मीटर चालू है, मतलब शायद मैंने अभी अभी एंट्री मारी है एंड आपको पता भी नहीं, क्योंकि कल क्या होगा किसको पता। मेरा प्रयास तो वही है कि मैंने बोला ना, मैं तो टॉम क्रूज जैसे करूंगी, करना है मुझे, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही, आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा वैसे तो। ग्रेट। साथ ही अगर सुपरस्टार्स की बात हो तो यू नो कि हिंदी एंड साउथ में क्या क्या डिफरेंस देखती है? खैर आज तो पैन इंडिया है, फिर भी क्या डिफरेंसेस आप देखती है, क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो क्या सबसे खासियत क्या है जो साउथ को आज लोगों के दिलों में पहुंचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है? मुझे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एवरीबॉडी, बट मैंने जब से राज सर के साथ काम किया, राजमौली सर के साथ काम किया, नेल्सन सर के साथ काम किया, मुझे एक बात उनकी बहुत पसंद है कि वो अपने कल्चर को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और वो ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो बी इट राजमौली सर, बी इट नेल्सन सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम to kind of teach me that the moment you accept yourself, that's and your roots, I think that reaches to the audience the most. Tamanna, I had spoken to Nyanvel Raja and Satyanarayan Garu. So they were saying we are very safe down, producing Telugu films and Tamil films. They are doing very well. Since you've been in the industry, you know about business also, must be knowing. And the films in Hindi are not doing well. Would you like to comment something as an actor? Ma'am, every film has its own destiny. I just am not that person who will generalize this industry and that industry, because I have been a part of both. And I feel like everyone is, ऐसा कोई इंसान नहीं जो सेट पे जाता है बोलता है कि मैं खराब फिल्म बनाऊंगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, सब अच्छी फिल्म बनाने के लिए जाते हैं। But I do feel like sometimes we all have a habit, even as human beings, we have a habit of repeating a certain pattern. And I feel like people learn from that. हर चीज़ का एक दौर होता है, एक फेज होता है। शायद एक फेज है जो कुछ वक्त के बाद हमें बहुत सरप्राइज करेगा। Like I'm super excited to see, when Rocky and Rani come out. I think that's a film that I am looking forward to from the Hindi film industry. And I feel like as a film industry, we have to celebrate each other. I think ये बहुत हो गया दूसरों की फिल्मों के बारे में बात नहीं करना, दूसरों को प्रेज नहीं करना। I think हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक इंडस्ट्री हैं, एक साथ हैं। And I feel like जब सब फिल्में अच्छी जाएंगी तो everyone gets to make money, and then we make more movies and we entertain you more. That's also the new age of actors that is there. Well, somebody's talking about insecurity earlier. I think that's gone to a large extent, and it works wonderfully well. So yeah, that's fantastic. So.